Good morning, students. Chapter 1 of macroeconomics is under revision, and today I'll tell you another terms that I'm starting from imputed value. These terms are used in the chapter of national income for the sake of measurement of national income by all the three methods, which are product method, income method and expenditure method. So, imputed value is estimated value of goods which are produced but not sold in the market. Imputed means कि उनकी हम वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं जो गुड्स हमने प्रोड्यूस तो किए हैं बट मार्केट में सेल नहीं किए. देन फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द factors of production for rendering productive services. It is factor cost to firm but factor income to the factors. कि जो भी इनपुट्स के ऊपर किए जाने वाला खर्चा एक प्रोड्यूसर करता है वो एक प्रोड्यूसर के लिए फर्म के लिए है फैक्टर कॉस्ट, लेकिन जो पेमेंट्स उनको दी जा रही हैं वो उनके लिए है फैक्टर पेमेंट. नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस. Market price is the price at which a commodity is sold in the market, sale and purchase. Then indirect tax. Taxes which are levied by the government on production, sale and import of commodities are called indirect tax. Indirect tax examples like excise duty, sale tax, VAT, custom duty, octroi, entertainment tax, service tax. The difference between indirect and direct tax is already told to you, that taxes which can be shifted on others, imposed on one and paid by the other. Burden is on another person and imposed on one person. So they are indirect tax. And direct tax, the burden is on the person on which it is imposed. जिसके ऊपर लगाया गया है उसी को उसका बर्डन है, उसी को उसको पे करना है, लेकिन इनडायरेक्ट को हम कस्टमर पर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये सेल और प्रोडक्शन पर लगाए गए टैक्स होते हैं. नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं लाइक कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. नेक्स्ट सब्सिडीज. सब्सिडीज आर कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट to the enterprise to encourage production of certain commodities or to promote exports or to sell goods at prices lower than the free market prices. सब्सिडी जिन गुड्स के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने प्रमोट करना होता है उसको कॉस्ट उसकी कम करनी होती है ताकि वो कॉमन पीपल को चीप रेट्स पर अवेलेबल हो सके, तो वो गवर्नमेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर कंपनी को, फर्म को सब्सिडी देती है, एक फाइनेंशियल ग्रांट देती है ताकि वो प्रोडक्ट चीप हो जाए मार्केट में, उसकी कॉस्ट कम हो जाए और वो चीप रेट्स पर लोगों को अवेलेबल हो जाए. देन वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इज derived by sales plus change in stock is equal to value of output. Then value added. Value added refers to the addition of value to intermediate goods by a firm by virtue of its production process, production activity. So value added is equal to value of output minus intermediate consumption, intermediate cost. Then factor income. Factor income is payments made to a factors of production for rendering services. It is called factor income. Examples are rent, wages, interest and profit. Then transfer income. Payment received without any good or service provided in return is called transfer payment or transfer income. So examples are gift, old age pension, scholarships, unemployment allowances. These are only paid and nothing got in receipt. बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं लेकिन हमें सिर्फ मिलता है, बदले में हम कुछ देते नहीं हैं. नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग and presenting national income accounts
based on the principles of income accounting, business accounting. Then one term is used, circular flow of income. It refers to continuous circular flow of income, flow of money and goods between major sectors of an economy. Major sectors are two, one is household sector, other is farm sector. When the goods are circulated between two, when the money circulates between the two, it is called circular flow of income. Flow of income is called money flow. Flow of goods is called real flow. So students, do revise daily whatever is told to you. If any term is not clear, then you can ask. That's all for today. Thank you.